Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start the new unit, that is fractions. हमने integers unit discuss किया, उसके questions भी solve किए. Now let's try to understand what are fractions. Now a fraction is any part of a group number or whole. A fraction is any part of a group number or a whole. जैसे आप लोगों को पता ही है जो फ्रैक्शन है इट्स ए पार्ट ऑफ ए होल. तो लेट्स कंसिडर हियर वी हैव कंसिडर्ड हियर ए सर्कल. वन सर्कल हैज़ बीन कट इन हाफ. हाफ इज़ अ फ्रैक्शन एंड वी राइट वन हाफ एज 1/2. तो इस सर्कल को हमने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया एंड ये वाला पार्ट this is a fraction of this whole circle and this second part, this is also the fraction of this whole circle. So a fraction is any part of a group number or a whole. Now तो यहाँ पे हमने इस सर्कल के दो हिस्से किए, दो बराबर हिस्से किए and one part is represented by this number, that is 1/2. Now what is this 1/2? This is a fraction. This is a fraction. So the top number is called as the numerator. This one is called as numerator here and the bottom number is called as the denominator. तो जो ऊपर का नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं and the number bottom number इसको हम denominator कहते हैं. Now it's the number of parts we have. It's the number of parts. Suppose जो ऊपर का नंबर है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं ये रिप्रेजेंट करता है the number of parts we have. Suppose ये वाला जो पार्ट है इसका हाफ पार्ट, तो it represents this thing and this denominator represents the total number of parts. तो total number of parts कितने हैं? 2. This represents denominator represents the total number of parts. Now you can remember this fraction as it's a number which is in the form of p by q or x by y, p by q or x by y, where this p and q they both are not equal to 0. तो फ्रैक्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वो नंबर जो p by q के फॉर्म में हो where p and q they are not equal to 0. that means it should represent something. ठीक है. So this is the definition of fraction. You can easily remember this thing. Now there are three main types of fractions. There are three main types of fractions. Fractions की तीन types हैं. Number first is proper fractions. Proper fractions. Number second is improper fractions. Improper fractions. And number third is mixed fraction. Number third is mixed fraction. So any number in the form of p by q where p and q are not equal to 0 or a fraction, it represents a part of whole. You can remember any of these definitions. Now there are three main types of fractions. One is called as proper fraction, second one is called as improper fraction, and third one is called as mixed fraction. Now let's understand one by one. Now a proper fraction is that fraction in which the numerator is less than the denominator. So a fraction in which numerator is less than denominator is called as proper fraction. जो भी fraction होगा ऐसा fraction जिसमें numerator less than होगा denominator, that is we call as proper fraction. Here you can see
1/2 denominator is greater than numerator or numerator is less than denominator. This 1/4 numerator is less and denominator is greater. 2/3, 7/10, and you can have lot of examples. Suppose 4/100, ठीक है, या 20 divided by 300. So these all fractions, where numerator is less than denominator, or you can say that denominator is greater than numerator, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से. तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस. सो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन. Now the second type of fractions, that is improper fraction. तो जो पहला टाइप आपने डिस्कस किया, दैट वाज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. नाउ सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन, that is improper fraction. So here the improper fraction means a fraction in which the numerator is larger than or equal to the denominator. तो improper fraction में क्या होता है, the numerator is larger than or equal to the denominator. So that is called as improper fraction. तो proper fraction में न्यूमरेटर छोटा होता था डिनोमिनेटर से, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से. जैसे 10 डिवाइड बाई 2, ठीक, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 20 डिवाइडेड बाई 19, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. So these all type of fractions, all fractions having the numerator greater than denominator or denominator less than numerator, these all fractions are called as improper fractions. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप एक चीज़ याद रखोगे, उसका डिनोमिनेटर जो होता है दैट इज़ लेस दैन इट इज़ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा होता है, प्रॉपर में डिनोमिनेटर बड़ा होता है. नाउ the third type of fractions, that is called as mixed fraction. Now what's a mixed number or a mixed fraction? A number written as a whole number with a proper fraction. तो मिक्सड नंबर किसको हम कहते हैं कि इसमें हम लिखते हैं एक whole number and with a proper fraction. So the combination of any whole number with a proper fraction, that we called as mixed number. जब भी ऐसी कम्बिनेशन होगी या होल नंबर के साथ आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो उस सारे होल नंबर को हम कहते हैं मिक्सड नंबर. सो a mixed number is written as a whole number with a proper fraction. Now suppose this 2 and 1/2, this is your mixed number. Now how can you solve this mixed number? 2 and 1/2, this is your mixed number. Now there is a rule to make this mixed number a fraction, a simple or an improper fraction. Now you have to multiply this whole number with the denominator of this proper fraction and add the product to its numerator and divide this whole by already the denominator of this proper fraction, that is 2. So this is equal to 4 plus 1 divided by 2 and this is equal to 5 divided by 2. तो ये आप याद रखोगे जब आप किसी भी मिक्सड नंबर को सॉल्व करोगे, एट द एंड you will get an improper fraction. मिक्सड नंबर या मिक्सड फ्रैक्शन होता क्या है? दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन. तो जितनी भी एग्जांपल्स आप ऐसे लिख सकते हो, सपोज हम दूसरे एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे 5 and 1/3. 5 क्या है? होल नंबर है, एंड 1/3 दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन. सो दिस कम्बिनेशन इज कॉल्ड एज मिक्सड फ्रैक्शन और मिक्सड नंबर. नाउ अगर आप इसको सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे? नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दिस होल नंबर
with the denominator of this proper fraction and add numerator of this proper fraction to this product and divide the whole by this denominator of this proper fraction, that is here 3. So this is equal 5 3s are 15 plus 1 is 16 divided by 3, and this is an improper fraction at last. तो जब भी आप मिक्सड नंबर को सॉल्व करते हो, उसका वैल्यू निकालते हो, उसको रिड्यूस करते हो फ्रैक्शन में, तो ऑलवेज आता है लास्ट में improper fraction. So these were the three types of fractions. One is called as proper, in which the numerator is less than denominator. Second one is called as improper fraction, in which the numerator is greater than denominator. And third one is called as mixed number or mixed fraction. It is the combination of a whole number with a proper fraction, and and whenever you will solve or reduce this mixed number, you will always get an improper fraction at last. Now, what are equivalent fractions? Now, equivalent fractions have the same value. Equivalent fractions have the same value even though they may look different. जो equivalent fractions होते हैं, these are the fractions having the same value, but even though they may look different, they are the fractions that name the same amount or part. ये ऐसे fractions होते हैं जो represent करते हैं same amount को और same part को. For example, जैसे यहाँ पे 1/2, 2/4 and 4/8. These three fractions, they look as different, but they all are same. 1/2, 2/4 and 4/8, these all fractions are same, though they look as different. Now let's understand this thing. Now 1/2, this is one circle. Now you have divided this circle into two parts. एक part को आपने कलर किया इससे, एक कलर से दूसरे को वाइट कलर से, ठीक, येलो एंड वाइट. So that means you have divided this circle into two parts. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, this circle represents the fraction that is 1/2. Now यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इस सर्कल के 4 पार्ट्स किए. You have divided this circle into 4 parts, 4 equal parts, ठीक है. Now और आपने कितने पार्ट्स को कलर किया, 2 पार्ट्स को, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4. Now if you will reduce this 2 1s or 2 2s or 4, तो इसका वैल्यू भी कितना निकला, 1/2. और अगर आप इसको पहले वाले से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी हाफ जो था जिसको हमने येलो कलर किया था, और यहाँ पे भी 2/4 भी इतने ही पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स 2/4 और 1/2 दे बोथ आर सेम. तो अगर आप इस तीसरे फिगर को देखोगे, यहाँ पे हमने टोटल पार्ट्स 8 किए, यू कैन सी दिस, बट कलर कितने पार्ट्स को किया, 1 2 3 4. सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज 4/8. बट अगर आप देखोगे, होल सिस्टम को देखोगे, इसमें भी उतने ही पार्ट्स का कलर किया है या उतना ही पार्ट कलर्ड है जितना कि पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हमने किया था, पहली फिगर और दूसरी फिगर में किया था. तो that means we can say that this 4/8 is also equal to 1/2. 4 1s or 4 2s are. So in other words, you can say that equivalent fractions are those fractions whose numerical value remains always same. उनका जो value होता है that doesn't change, though they look as different, but the value of these fractions is always equal to same. तो इनका जो वैल्यू होता है दैट इज सेम. इनको आप रिड्यूस भी कर सकते हो बाय डिवाइडिंग दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर. तो किसी भी फ्रैक्शन का आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना भी सकते हो बाय दिस, लाइक दिस. सपोज आपके पास फ्रैक्शन है 3/4, तो इसके इन्फिनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हो आप. हाउ? by just multiplying the same number to numerator and denominator. Suppose numerator को भी 2 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी, तो दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 4. तो 6/4 और 3/4 था, 6 डिवाइड बाई 8 आएगा यहाँ पे.
तो 6 डिवाइड बाई 8 और 3/4 दीज आर कॉल्ड एज, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा 3/4 का, तो इसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से, so that will be equal to 9 divided by 12. So 9/12 is always equal to 3/4. These are equivalent fractions. So you can find infinite number of equivalent fractions of a given fraction by just multiplying the numerator and denominator with the same number.